conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. See, I just want to be able to climb without a fall, to get out of this mazeland and run. Please strike me thunder, let me get closer to the light. Please strike me thunder, so I can be free. So I've come to the conclusion, I'm just one man amongst thousands. In this world I'll allow them, sure they'll do fine without me. The chemicals in my head don't work as yours, 'cause every piece of road is a little bit of happiness. Every kind of load causes a little bit less regret. Please strike me thunder, let me get closer to the light. Let me go under the... Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Throughout Riders. So today I am in Goa to attend Rider Mania, which is organized by Royal Enfield itself, and today is a very big day for me because I have completed my longest ride ever, 500 km one way. And आज हम निकले थे सुबह अराउंड 5:30 एंड हम लोग पहुँचे अराउंड 5. हमने स्टॉप लिया था साई इंटरनेशनल, जैसे कि आपने देखा. एंड अभी हो रहे हैं 6 o'clock. ऊपर सब लोग स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पर व्लॉग शूट कर रहा हूँ. सो फर्स्ट डे, आज गोवा में पहला दिन है और हम लोग रुके हैं एक बंगलो में. बंगलो बहुत ही बढ़िया है, सुपर्ब लोकेशन, वैगेटोर बीच के पास. एंड दिस आर द बाइक्स वी हैव. इंटरसेप्टर, बुलेट, क्लासिक, माई क्लासिक, क्लासिक एंड 2 हिमालयन. सो आज रात को रेस्ट करेंगे और सुबह 11 o'clock के आसपास इवेंट स्टार्ट होने वाला है. सो अभी थोड़ा सा रेस्ट करके, डिनर करके एंड देन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके हम लोग वापस आएंगे एंड थोड़ा सा रेस्ट करेंगे. देन अर्ली मॉर्निंग विल लीव फॉर द अवेटेड राइडर मेनिया. सो लेट्स सी द बंगलो. दिस इज द लिविंग रूम. अभी लाइट्स बंद है. किचन, रूम, सुपर बंगलो. यहाँ पर हम लोग 4 दिन के लिए रहने वाले हैं. सो इट्स गोना बी फन. दिस इज द अदर रूम. सो गाइज, राइडर मीनिया में थोड़ा इको हो रहा है. राइडर मीनिया में मैं 3 साल से आना चाहता हूँ, बिकॉज तब पॉसिबल नहीं था क्योंकि लास्ट ईयर लाइसेंस मिला है. सो हाय.
सो गाइस, अगर आपको पता नहीं है, राइडर मेनिया रॉयल एनफील्ड ऑर्गेनाइज करता है एंड ओनली रॉयल एनफील्ड आर अलाउड. Bikers from all over India come to Goa to attend this event, and this time the number is gone up to 9,500 something, and 1,000 people from Pune itself, and we are among the 1,000. हम लोग आए हैं BRC ग्रुप के साथ, ब्लिट्सक्रिग राइडिंग क्लब. सो सुपर ग्रुप है, प्रो राइडर्स है सब, and this is the first time I'm joining them. Hopefully I'll join them on the coming rides, all the coming rides, and बस और क्या जानना है, बाकी सब वीडियो आते रहेंगे. मैं तीन पार्ट्स में करने वाला हूँ इस वीडियो को, राइडर मीनिया, क्योंकि 3 डेज़ होता है इवेंट. सो सारे वीडियोस देखना, एंड इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ. सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द सेम यूज़र नेम, अथरबाउट राइडर्स. सो let's meet in Rider Mania. वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता कितना अच्छा एक्सपीरियंस था. कैसी थी एंट्री गाइस? सो बेस्ट एंट्री ऑफ BRC. सो अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे है. I'll show you around. Everyone ready? Everyone ready? Yeah. 1, 2, 3, start! First. Focus. So guys, the event has started and I am enjoying myself a lot without having any of the beer. अभी beer drinking competition खत्म हुआ है and a person from Bangalore has won it for consistently 3rd time, and maddening drinking abilities, I can say that. यहाँ पर accessories के shops है, 100 kmph, Renox, Bandit, Ditstop and Senna, everything else we have got here, and it's superbly fun. अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे एंड होटल जाकर थोड़ा सा रेस्ट होकर वापस इवनिंग में आएंगे. इवनिंग में एक कॉन्सर्ट होने वाला है एंड दैट्स इट. लॉट ऑफ बियर इज देयर, लॉट ऑफ, लाइक इट्स माइंड ब्लोइंग. आई विल शो यू जस्ट अ मिनट. दीदी हम लोग चेंज करके लेके आएंगे पक्का. ये सिर्फ हमारे ग्रुप का है, बाकी दिखोगा तो. I hope you guys are having a great time. We've got 2 more days of beer, barbecue, and biking. So make sure that you are taking part in all the events that are happening. Lots of food stalls, lots of accessory stalls, and
So guys, it's pack up for day 1 of Rider Mania, and if you have not noticed, I'm wearing Rider Mania t-shirt which was given to everyone who took part in Rider Mania. And the first day was amazing, absolutely good. The beer drinking competition, the bottoms up, and a lot of things, meeting new people, making new friends. But the main thing is tomorrow, the dirt track races of Himalayan and the classic segments, and it's gonna be fun. I bet it's gonna be fun. So in the next video I'll show the dirt races, and today we saw the custom bikes also, but I'll try and show it to you a little nicely. But that's it for this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and do follow me on Instagram, the same username, Rider. And that's it for this video, guys. Take care, bye bye, see you in the next video.